Hello everyone, a very good morning to all of you. How are you all today? I hope you all are fit and fine, right? So students, this is our second video lecture of EVS chapter number 5, soil. Okay, so let's start. So before we starting our today's topic, let's do the quick revision. Yeah, so in our previous video, we were doing one activity which is word maze. I hope you all found all the remaining words, right? They are weathering, silt, clay, sand, humus, minerals, loam, topsoil, bedrock and erosion. So I hope you all guys found the remaining words. Okay. Then after, the topic is formation of soil, right? We learned this topic in our previous video, so let's do a quick revision of it. So how soil is formed? Students, how soil is formed? Soil जो है वो कैसे बनती है? So by breaking down of rocks, right? Soil formed by breaking down of rocks. Sun's heat, rain, storm, wind, all these factors affects the rock, and the big rock will break down into smaller pieces, and that is how soil formed. So big pieces of rocks are broken down by wind and water into smaller pieces till we get a fine powder. This process is called weathering. जो big rocks होते हैं, right, उसके ऊपर बहुत सारे factors affect करते हैं. For example, sun's heat, rain, storm, wind, right, all this factor affects the big rocks. That is how the big rocks broke down into the smaller pieces. Now the smaller pieces of rocks also got affected by these factors, and it will also convert into the fine powder, right? So from the big rocks we'll get the fine powder. This whole process is called weathering. This is how soil is formed. Now this fine powder, right, this fine powder will get from the big rocks, right, when the big rocks broke down into smaller pieces, and also the smaller pieces of rocks got affected by the weathering factors, right, and we will get the fine powder. Now this fine powder, it is known as sand, and it also mixes with the remains of dead plants, dead animals and minerals, right. This fine powder is mixes with these things, then the soil is formed. जब सोइल के साथ जो फाइन पाउडर होता है, वो फाइन पाउडर को हम सैंड कहते हैं. जब सैंड के साथ डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें उसके साथ मिक्स होती है फाइन पाउडर यानी कि सैंड के साथ, तब हमारा सोइल जो है वो फॉर्म होता है. The soil is defined as the top layer of the earth's surface, right? It consists of sand, remains of dead plants and animals, minerals with some amount of water and air in it, right? So soil contains what? Soil contains sand, dead plants, dead animals, water and air. These all things contained by the soil. Soil is very important for life on earth. Soil is very important for earth. Why? Because most of the plants grows in soil. Most of the plants grows in soil, right? Without soil we cannot plant trees. So soil is very important for us, and if there is no plants, there is no trees, how we get the food and the oxygen, right? Because the trees gives us food and the oxygen, which is very essential for the human as well as the animal's life, right? So that is how soil is very important for us, and it also home to many insects and animals, right? So this is how soil formed, and this is how soil is very important for the life on earth. Fine. Now let's start our today's topic. It is composition of soil. Our today's topic is composition of soil. So let's start. Okay. Soil is made up different types of soil particles. Soil is made up of different types of soil particles. Soil जो है वो कैसे बनता है? Different particles. When different particles comes together, they form a soil, right? So soil is made up of different types of soil particles. Soil के जो different types के particles होते हैं, उससे बनता है soil. So the particles are sand, silt and clay. Here you can see this
sand, silt and clay. First one is sand. There are the largest soil particles. Sand. These are the largest soil particles. See students, this is soil, right? This picture is of soil. Now in this sand, so here you can see this sand is the largest particle. Sand is the largest soil particle. Sand जो होता है वो soil के अंदर सबसे largest particle होता है. Then the silt. So silt. This particle are smaller than sand particles but bigger than clay particles. See, sand are the largest soil particles, right? While silt is smaller than sand particles and bigger than clay particles. Then comes clay. So these are the smallest soil particles. Clay are the smallest soil particles. तो soil जो है वो different types के soil particles से बना हुआ होता है. Soil is made up of different types of soil particles, right? So in this, sand are the largest soil particles. Sand are the largest soil particles. While silt, these particles are smaller than sand but bigger than. Other than this, soil is also contains small stones and pebbles called gravel. Other than this, soil also contains small stones and pebbles called gravel. So इसके साथ साथ soil जो है वो अपने अंदर small stones और pebbles को भी contain करती है. Now the small stones and pebbles called gravel. Minerals such as iron, calcium and potassium and humus. Soil also contains some amount of air and water. Now other than this, sand, silt and clay, other than this, soil also contains small stones and pebbles called gravel, minerals and humus. And also soil contains some of air and water, right? So soil contains what? Sand, silt, clay, small stones, pebbles, minerals, humus, air and water, right? So all these things contained by the soil, right? So soil is made up of different types of soil particles. Now in these particles, sand are the largest soil particles, silt are the smaller than sand particles but bigger than clay particles, and the last one is clay. So the clay are the smallest soil particles. Okay, comparative size of soil particles. सोल के जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी कंपेरेटिव साइज हमें यहाँ पे दिखाई गई है कि ये जो है दिस इज सैंड पार्टिकल्स. ये जो पूरा पिक्चर है इट इज़ द पार्टिकल ऑफ सैंड, राइट? इट इज़ द बिग वन. नाउ दिस सिल्ट यहाँ पे हमें दिखाया गया है. तो सिल्ट जो है वो सैंड पार्टिकल से स्मॉल है बट इट इज़ बिगर देन क्ले पार्टिकल्स, राइट? सो सैंड इज द largest soil particles, clay is the smallest soil particle and silt it is smaller than sand particles but bigger than clay particles. Okay, so this is the different types of soil particles. Now soil contains what? So soil contains sand, silt, clay, stones, pebbles, minerals, humus, air and water, right? Soil contains all of these things. Then our next topic is types of soil. Types of soil. There are mainly three types of soil. There are mainly three types of soil depending upon the amount of different soil particles present in it. There are mainly three types of soil depending upon the amount of soil particles present in it. There are sandy, clay and loamy soil. So students, types of soil mainly क्या होता है? थ्री टाइप्स के होते हैं, राइट? सोइल जो है वो मेनली थ्री टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट इज़ डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सोइल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट.
सो डिफरेंट सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की सॉइल है। सॉइल के अंदर जैसे हमने यहाँ पे देखा कि सॉइल जो होते हैं उसके अंदर कितने डिफरेंट सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल सिल्ट, सैंड, क्ले, राइट। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल जो होती है वो सॉइल के अंदर कितने सॉइल पार्टिकल्स है उसके ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल सैंडी, क्लेई एंड लोमी सॉइल, राइट। टाइप्स ऑफ सॉइल डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट। तो कोई सी भी सॉइल के अंदर सॉइल पार्टिकल्स किस अमाउंट में है, राइट, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की सॉइल है। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन, इट इज sandy soil. So the first type of soil is sandy soil. This soil has a greater proportion of sand particles. This soil has a greater proportion of sand particles. Sandy soil feels rough. Turn the page. Sandy soil feels rough and gritty and is non-sticky when wet. It does not hold much water, drain most of it. So students, first one is sandy soil. So sandy soil कैसी होती है? Sandy soil के अंदर most of उसके जो soil particles होते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा sand होती है, right? So there are three soil particles: silt, sand and clay. Now in this sandy soil there are most of sands. सैंडी सॉइल के अंदर सबसे ज़्यादा सैंड पार्टिकल्स होते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो ग्रिटी एंड इज़ नॉन स्टिकी व्हेन वेट। तो ये जो टाइप की सॉइल होती है जब वो वेट होती है तो वो नॉन स्टिकी होती है। इट डज़ नॉट होल्ड मच वाटर एंड ड्रेन्स मोस्ट ऑफ इट। जो सैंडी सॉइल जो होती है वो बहुत ज़्यादा वाटर अपने अंदर होल्ड नहीं कर सकती है, राइट। सैंडी सॉइल डज़ नॉट होल्ड मच वाटर एंड ड्रेन्स मोस्ट ऑफ इट। तो जो वाटर होता है वो उसके अंदर से ड्रेन हो जाता है, मतलब निकल जाता है, क्योंकि सैंडी सॉइल के अंदर सबसे ज़्यादा सॉइल पार्टिकल्स सैंड के होते हैं, राइट। इन द सैंडी सॉइल देर आर ग्रेटर पार्टिकल्स ऑफ सैंड्स, दैट इज़ वाई इट डज नॉट होल्ड मच वाटर एंड ड्रेन्स मोस्ट ऑफ इट, फाइन। तो सैंडी सॉइल के अंदर सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स सैंड के होते हैं। देन कम्स द सेकेंड वन इज क्लेई सॉइल. Second type of soil is clayey soil. So this soil has a greater proportion of clay particles. This soil has a greater proportion of clay particles. Clay soil feels smooth when dry and lumpy and sticky when wet. So this second type of soil is clayey soil. So this type of soil has a greater proportion of clay particles. तो क्लेई सॉइल जो होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन जो होता है वो क्ले का होता है, राइट। क्लेई सॉइल के अंदर सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स क्ले के होते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड क्लेई सॉइल. सो क्लेई सॉइल फील स्मूथ व्हेन ड्राई. क्लेई सॉइल जो होती है वो हमें बहुत ही स्मूथ फील होता है जब वो ड्राई होती है. And lumpy and sticky when wet. When this clay soil get wet, it feels lumpy and sticky, right? So clay soil has a greater proportion of clay particles. Clay soil feels smooth when dry and lumpy and sticky when wet. Then comes our third types of soil, which is loamy soil. This is called loamy soil. Now let's see what is it. So this soil has almost the same amount of sand, clay and silt. So students, this type of soil has almost the same amount of sand, clay and silt. Loamy soil is the best soil for growing plants. It is rich in nutrients and humus and allow water to pass through easily. So students, here there are most of three types of soil: sandy soil, clay soil and loamy soil. Now in this loamy soil, the amount of particles are almost same. In this loamy soil, the amount of particles are almost same for the sand, clay and silt. Sand, clay and silt जो soil particles होते हैं वो इस
टाइप की लोमी सोइल में इक्वल होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं. दैट इज़ वाई दिस लोमी सोइल इज़ बेस्ट फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. जब हमें प्लांट्स को ग्रो करना होता है तो ये लोमी सोइल जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है. वाई? बिकॉज इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस एंड अलाउ वाटर टू पास थ्रू ईजीली. बिकॉज सी दिस लोमी सोइल इज़ वेरी बेस्ट फॉर द ग्रोइंग प्लांट्स. वाई? बिकॉज दिस लोमी सोइल इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस. इस सोइल के अंदर बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और ह्यूमस होता है. एंड ऑल्सो इट अलाउज वाटर टू पास थ्रू ईजीली. इस टाइप की जो सोइल होती है वो वाटर को अपने अंदर ईजीली ऑब्जॉर्व कर लेती है, अपने अंदर पास होने देती है ईजीली. दिस इज़ वाई लोमी सोइल इज़ द बेस्ट सोइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. राइट स्टूडेंट्स? सो आज हमने क्या सीखा? composition of soil. Right? Today we learned about composition of soil. Soil is made up of different types of soil particles. Soil जो होता है वो different types के soil particles से बना हुआ होता है. There are mainly three particles. There are mainly three soil particles. There are silt, sand and clay. Now in this soil, sand is the bigger particle. Here you can see this in the picture. Sand is the bigger particle. Clay is the smallest particle. And silt is bigger than clay particles but smaller than sand particles. Right? Sand are the largest soil particles. Clay are the smallest soil particles. But silt are the smaller than sand particles and bigger than clay particles. Right? sand particles से वो छोटी होती है और clay particles से बड़ी होती है. This is the different types of soil particles. Silt, sand and clay are the different types of soil particles. Then we also learnt about the types of soil. So students, there are mainly three types of soil. Remember, the types of soil depends upon the amount of different soil particles present in it. Right? Types of soil किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस soil के अंदर soil particles किस amount में है. किसी भी soil के अंदर soil particles जो होते हैं वो किस amount में उसके अंदर है, उसके ऊपर उसका type जो है वो decide होता है. Now what are the soil particles? Silt, sand and clay. These three are the soil particles. Right? तो जिस भी soil के अंदर ये तीनों soil particles जो है उसका amount कितना है उसके ऊपर उसका types of decide होता है. So there are mainly three types of soil. First one is sandy soil, second one is clayey soil and the third one is loamy soil. So first one is sandy soil. So what is it? This soil has a greater proportion of sand particles. Why it is called sandy soil? Because it has more sand particles. This types of soil contains more soil particles. जो सैंडी सोइल होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा सैंड पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए उसको सैंडी सोइल कहते हैं. राइट? दिस सोइल हैज़ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ सैंड पार्टिकल्स. नाउ सैंडी सोइल फील्स हाउ? सो द सैंडी सोइल फील्स रफ एंड gritty and is also known sticky when wet. But this types of soil does not hold much water. It drains most of it because it contains much sand particles. Right? That is how it does not hold much water. Then the second type is clayey soil. So this type of soil contains more clay particles. That is why it is called clayey soil. तो क्लेई सोइल के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है? क्ले के पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए उसको क्लेई सोइल बोलते हैं. तो जो दिस इज क्लेई सोइल फील्स स्मूथ व्हेन ड्राई एंड लम्पी एंड स्टिकी व्हेन वेट. देन लास्ट वन इज लोमी सोइल. So this soil has almost the same amount of sand, clay and silt. जैसे सैंडी सोइल में क्या था? सैंडी सोइल के अंदर सबसे ज़्यादा सैंड पार्टिकल्स थे. राइट? सैंडी सोइल कंटेन्स मोर सैंड पार्टिकल्स while clayey soil contains more clay particles. But in loamy soil the amount of particles almost same. Right? The amount of particles in the loamy soil are almost same. Sand, clay and silt are the same amount in it. So loamy soil is the best soil for the growing plants. Right?
loamy soil is the best soil for growing plants because it is rich in nutrients, humus, and allows water to pass through easily. This is why loamy soil is the best for growing plants. Okay, so here students, our topic is over, and your homework for the day is, okay, now underline the hard words. Weathering. Okay, मैं बोलती चाहती हूँ, आप प्लीज़ अंडरलाइन करना because my pen is not working. Yeah. So first one is weathering, then minerals, then humus, humans, then gravel, rough, then nutrients, loamy soil, clayey soil, and the sandy soil. Also underline these three words, right? So here is your homework. You have to write down all these underlined words in your fair notebook of EVS. Yeah. Chalo, thank you everyone. I hope you like this video, and if you have any query regarding this topic, the composition of soil and the types of soil, so you can drop a message or you can call me. Yeah. Thank you everyone. Have a wonderful day. Bye bye.